So we should start from here. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we will discuss some of the points, reflection back on the Didar, and we understand there has been many questions from the friends regarding this new style of Didar, the way Imam is blessing us, the way Imam have come closer to the Jamaat, the way Imam have come closer to the children of the Jamaat, and as well as elders of the Jamaat. So for a few minutes, we will take and we will reflect on that. So now that we have the very first Didar in the USA, and the state of Texas was blessed by the mercy of the Imam-e-Zaman. With anything, any blessings, any rewards, comes the responsibilities. Being first is good, but then when we are setting up an example for the rest of the Jamaat in the USA or rest of the Jamaat where Imam is about to go, the burden of the first, the burden of the responsibilities, the burden of being the role model is a great burden. And we should not take that lightly. And we should not take that lightly. Because our action will define and guide our brothers and sisters in the other regions, other states, and other cities around the USA, and then into Canada and other countries that would come after us. The Jamaats around the world have always looked at and have taken the examples of the meritocracy, the example of the behavior of the Jamaat, the generosity of the Jamaat, and the way we behave today will define how the other Jamaats will look at us, because we are one Jamaat, and in this global environment where every action has the consequences, everything we do is broadcasted live, and there is no place to hide because of this new technology. Everything is visible in the blink of an eye, and one cannot hide in this age and time. There are no second chances.
We used to say that maybe we will have the second and third chance to prove ourselves right. But in this world, in this time, there is no second chance. We only get one chance and one chance to do it right, or we lose that chance and opportunity. Being first, we have a lot of responsibility upon our shoulder. As in our previous 8 lectures, 4 in English and 4 in Urdu, again and again, it was emphasized that we are going to go to the Didar Hall for one purpose and one purpose only, and that was to have the best Didar physically, spiritually, and inshallah, intellectually. Physically, by looking at the face of the manifested Nur, the Imam Zaman. But if there are disturbances, if there are people jumping up and down, if there are people talking or calling out the Imam Zaman to draw his attention toward oneself. Remember, there are other 20, 30, 40, 50,000 Jamaat behind you. Your one action will define how the thousands behind you will receive that undivided, unbroken, the best and the first Didar of the 50th Imam, Imam Shah Rahīm al-Akram, even though he is most merciful. And even when we behave like children, he is like a Mehraban, generous mother and father, greets us with a great smile on his face, with an open arm, with his arm extended to shake your hand. And believe me, there is nothing wrong with that. If this is done in a disciplined and quiet manner, if he comes and wants to shake your hand, give you a hug, good for you. But screaming and yelling and discipline breaking is not good for you, nor for your Jamaat, and nor for those who may have traveled hundreds and thousands of miles to have the best Didar of their life. They did not come looking for that behavior. And the last point I would like to make, we should never forget who is the Lord of the day and the time.
who is Imam and who is Banda, slave, Mu'min, Kareeb, needy, receiver of this blessing and desire. Imam can be playful, and Imam can do whatever he wants. We have no question why Imam shook hands, no question why Imam did whatever he did, no question. Because when it comes to Imam, he is the Lord of the day and the time. He does as he wish. And we have no question whatsoever. But as a moment, Ghulam, slave, Banda, how does Banda, a slave, behave? Let me give you an example. Think of a master and a slave. Master can joke. Master can tease with the Ghulam. He can play with the slaves. But slave should never forget that he is the Banda, a slave of his master. He is not equivalent to us. He is above all else. And we are not equivalent to him. We cannot see him playing and start to play. No. This is not our tariqah. This is not our discipline. This is not our ethics. The relationship between the Malik and the Murid does not allow us to do that. चले थोड़ा सा उर्दू में समझाते चलते हैं ताकि हमारे वो साथी, और चूंकि मैं आपकी सरजमीन पर हूँ, आपने मुझे यहाँ पर जगह दी, तो फिर आपका हक बनता है कि मैं कुछ उर्दू के अंदर, आपकी ज़बान के अंदर भी कुछ बोलूं। हम बात कर रहे थे कि जब इमाम आपको ये एजाज देता है और आप पर नवाजिश करता है कि आप अपने मुल्क में पहली वो जमात हो कि जो इमाम के दीदार से नवाजी जाए, तो इस नवाजिश के साथ साथ आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है कि इमाम को हम किस तरह से वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे, और हमारा बिहेवियर, हमारा तौर तरीका, हमारे अमाल, हमारे एक्शन, हमारे एथिक्स, वो बाकी के मुल्क के जमातों के लिए एक मिसाल कायम करती है। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो एक अच्छी मिसाल कायम होगी। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, हमारा तौर तरीका अच्छा नहीं है, तो ये भी मिसाल कायम होगी। अब ये जमाना नहीं रहा है कि जब हम अगर कोई गलती करते हैं तो उसके ऊपर पर्दा डालते हैं। अब ये ऐसा एक जमाना आया है टेक्नोलॉजी का,
कि दूसरा मौका है ही नहीं, गलती को दुरुस्त करने का कोई मौका नहीं है। आप बस पहला ही चांस आपका आखिरी चांस। अगर आपने पहली मर्तबा कामयाबी से आगे बढ़ गए तो आप बढ़ गए, अगर नहीं तो नहीं, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है आपको उसको दुरुस्त करने के लिए। अब आपका ये अच्छा या ना अच्छा, जो भी बिहेवियर था, जो भी आपका अमल था, जो भी आपका एक्शन था, वो दुनिया ने देख लिया। और आपका जो रोल मॉडल बनना था, क्योंकि इमाम ने आपको नवाजा कि आप सबसे पहले हो गए जिसको मैं दीदार दूंगा आपके मुल्क में, और आपके मुल्क का सबसे बड़ा स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा जमात बसती है, और आपके स्टेट के ऊपर इमाम ने भरोसा किया और आपको पहला इस्माइली सेंटर और पूरे मुल्क का जरखाना बनाया। अब पूरा मुल्क भी और पूरी दुनिया की नजर भी आपके ऊपर है। आप कैसा बिहेव करते हैं, आपका कैसे एक्शंस है, वो लोग देखेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। इमाम ने अमेरिका के ऊपर और उसके बढ़कर टेक्सास के ऊपर अपना भरोसा, ट्रस्ट रखा है। तो क्या हमने इमाम के ट्रस्ट को पूरा किया, या हमने ऐसा कोई अमल किया कि जिससे ये ट्रस्ट जो इमाम ने हम पर किया था, जो भरोसा किया था, वो टूट गया है? क्या पूरी दुनिया आपको देखकर ये कह सकेंगी कि ये बेस्ट जमात है, जिनको पता है कि इमाम के हुजूर में कैसे खड़े रहना है, कैसे बैठना है, कैसा डिसिप्लिन जानना है, कैसे हाथ जोड़कर एक दीदार का मौका बनाना है? या आपके अमाल ने उस दीदार हॉल को, जो रूहानी व नूरानी होना चाहिए था, उसको बिगाड़ दिया? और आप ना भूले कि आपके पीछे सैकड़ों और हजारों की जमात बैठी हुई थी डिसिप्लिन के साथ इमाम के दीदार को हासिल करने के लिए। जब आपने उछल कूद की, शोर मचाया, उनका टेंशन, उसका ध्यान आपकी तरफ हो गया, जबकि उनका ध्यान इमाम के चेहरे की तरफ, जो खुदावंदी नूर नूर मौलाना शाह रहीम al-Ḥusaynī हाजिर इमाम थे। अब वो सेंटर ऑफ अटेंशन थे, या आप ने वो अटेंशन उनसे छीन लिया? आप सोचें इसके बारे में। क्यों कि हम पर इमाम ने भरोसा किया है और हमको सबसे पहले दीदार देकर हम पर करम बख्शिश की है, और हम पर एक जिम्मेदारी सौंपी। और वो जिम्मेदारी क्या थी कि बाकी के स्टेट्स, प्रोविंसेस, सिटीज एंड मुल्क के लिए आप मिसाल बनेंगे, और आगे कनाडा के लिए आप मिसाल बनेंगे, और आगे
पुर्तगाल और दूसरे ममालिक के अंदर जहां जहां पर अभी इमाम तशरीफ ले जाने वाले हैं, उसके लिए आप मिसाल बनेंगे। और ना भूलें कि वो मालिक है और हम गुलाम। मालिक खेल भी सकता है, मालिक जो चाहे कर सकता है, लेकिन हम गुलाम हैं। हम ना भूलें इस बात को। अगर कोई एक मालिक और एक गुलाम हो दुनिया बाने, और मालिक गुलाम से कोई मस्ती या कोई जोक कर ले, तो क्या लगता है कि गुलाम को भी अपने मालिक के साथ मस्ती और जोक करना चाहिए? नहीं, 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 हरगिज नहीं। क्योंकि वो मालिक है, वो कर सकता है, और वो जो भी करे हक है, क्योंकि वो अली है। वो हर चीज पर कादिर है, मुतल्लक है, हक रखता है वो हर बात पर। लेकिन हमारे पास ये हक नहीं है। हम गुलाम हैं, हम बंदे हैं, हम मोमिन हैं। हम उसके पांव की खाक के बराबर भी नहीं है। हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये जरूरी है इस बात को याद रखना कि हम कौन है और वो कौन है। हमें भूल नहीं जाना है। મને તમારી એક ચિંતા થાય છે, કે છે પીર સાહેબ। શું चिंता થાય છે? તમે માણસ રૂપે साहिब जी जानिया। मेरे को आपकी एक ही फिक्र होती है कि आपने इमाम को एक इंसान और जिस्म समझ लिया। ना भूलें कि वो खुदावंदी नूर है, वो खुदा के नूर का मजहर है। उसकी और हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो आपके पास आए, आपसे हाथ मिलाए, तो हम क्यों हाथ नहीं मिलाएंगे? मुबारक। लेकिन हम भागा भागी कर रहेंगे नहीं। हम उसको शोर से मौला पापा करके नहीं बुलाएंगे। हम बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। ना तो हमारे पास ये हक है, और ना ही ये वाजिब है हम पर। ना है तो ये हमको शोभा देता है कि हम उसके हुजूर में बदतमीजी या आवाज बुलंद उसको किसी एक आम आदमी की तरह पुकार रहे हैं, मौला पापा, मौला पापा। नहीं, दिस इज नॉट द वे a moment behaves. And of course, this is a platform that you will have a chance to ask question today. You cannot tell me how and why, but you can say, what can we do about it? How can we correct ourselves? And we will discuss. One at a time, we will discuss it. We will talk about it. I will want to show you something, and we will read this Farman, inshallah, line by line, and I will translate some of that in Urdu. But I wanted to show you something. I want to show you this one line where Imam started his direction, command, Farman for the Jamaat. And I don't know if you are listening. I don't know if you are reading this Farman, but this have
hurt me when Imam had to say that to me. And I'm going to highlight this for you so you don't forget. This was the first, after Imam's blessing came, dua came, where the farman, the command started. And Mullah said, we are a community who can be trusted. When I heard this word, when I read this word, as Mullah has said, read my farman and reflect on it. And I'm reflecting on it as per my Mullah's farman. And I can tell you, I don't feel proud. I don't feel proud. I don't feel proud. This should be the first word of the Imam for the Jamaat, that we are a community who can be trusted. Imam had put his trust on us. There is a bond and a promise between us, between the Imam and the Jamaat. Sometimes it's a quiet, silent promise. And what is that? Imam saying without a word, my noor, my blessing, my khanavadan is always on my Jamaat. And what is our silent promise to the Imam? We will behave. We will follow your command. We will be disciplined. We will not break your trust, Mullah Bapa. You have put your trust on us. We will not break it. You can proudly say, we are your angels. And angels do not behave proudly without discipline. How should a moment be in the huzur of the Imam and Zaman, the Lord of the time and space? How should we behave? When we give our word, it has value. It is reliable and respected. When any member of my Jamaat breaks that trust, when they mislead or misappropriate from another member of the Jamaat or any other human being, this is unacceptable for us. क्या मौला ने अपना फरमान कहां से शुरू किया? देखें आप कि हम वो कम्युनिटी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो आपने वादा किया है उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए और उसकी कोई इज्जत होनी चाहिए। और आप ना तो आपस में एक दूसरे के ऊपर का ट्रस्ट ब्रेक करेंगे और उससे बढ़कर एक ट्रस्ट इमाम और उसके मोमिन, उसके बंदों के दरमियान में होता है। आप ये ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ना तो आपस में, ना इमाम की तरफ और ना ही दूसरे लोगों की तरफ। ये तीन ट्रस्ट की बात हो रही है एक साथ। एक ट्रस्ट जो इमाम और बंदे के बीच में,
एक जो मोमिन और मोमिन के बीच में, और एक जो जमात और दूसरे लोगों के बीच में। आप किसी भी ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। और मौला फरमाते हैं ये बात मुझे बिल्कुल ही मंजूर नहीं है, बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। मौला फरमाते हैं there is never a good time to behave unethically। कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि जब आप अपने एथिक्स, अपने डिसिप्लिन, अपने आपे से बाहर आ जाएंगे। कभी भी नहीं। ना तो दरबार वो हॉल है, ना दीदार का वो मौका है, ना जमात खाना का वो वक्त है। कहीं पर भी ये मौका नहीं है। हमें अलाउ ही नहीं है ये। हमें शोभा नहीं देता है ये बात कि हम ऐसी हरकत करें। So my friends, whatever happened, we cannot reverse. And if you feel regret, and if you feel ashamed, then you will find the Imam-e-Zaman, Shah Rahīm al-Akram, the most merciful, most forgiving. And inshallah, our Jamaat is as well most merciful and most forgiving. And why would they not be? They are the one Jamaat, and we love each other. And we will forget and forgive each other. Our apologies to those who came from far away and we did not deliver on our promise. We broke your trust. But inshallah, as one Jamaat, we can fix that. And Imam-e-Zaman is most merciful. And he will help us grow together. Inshallah. 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 Didar Mubarak to all. Let's read some of the lines of the blessings of the Imam-e-Zaman, so our heavy heart may feel light and blessed and Nurani with the Khanavadan of the Imam-e-Zaman. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. My dearest Jamaat, there was a question instantly after the Didar. A young lady asked, do we remember Shah Karim used to call us my beloved spiritual children? Shah Rahīm uses the word, the language, the vocabulary, my dear Jamaat, in this case, my dearest Jamaat. To all my spiritual children, my dearest Jamaat, मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी जमात, to all my spiritual children, और मेरे सारे रूहानी बच्चों के लिए I give my most affectionate loving blessing. मैं इनके लिए अपना बहुत ही प्यार भरा दुआ आशीष फरमाता हूँ। आमीन आमीन। याद रखें, ईच इमाम अपने अपने जमाने के हिसाब से अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। जिस तरह से हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप, आका सुल्तान मोहम्मद शाह ए जमातों करके हमको पुकारते हैं। ए जमातों, इस तरह से हमको पुकारते हैं। शाह करीम ने हमें हमारे रूहानी बच्चों के कर पुकारा।
शाह रहीम हमें मेरे प्यारे, मेरी प्यारी जमात और मेरे रूहानी बच्चों करके पुकारता है। जो भी इमाम अल्फाज यूज करता है, लबैक, आमीन, हमारे लिए वही बेहतरीन अल्फाज है। क्यों? कि वो मेरे मौला के प्यारे अल्फाज, ये मेरे मौला की प्यारी बातें हैं, बस वो मुझे प्यारी है क्योंकि वो मेरे मौला को प्यारी लगती है, उसको अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छी लगती है। These are the word of my loving spiritual father. Whatever word he used are the best words in my eyes, and those are the most dearest word, the language, the vocabulary to us, because we love him and he loves us. और ये बात मैं क्लियर करना चाहता था इससे पहले कि कोई सवाल पूछे। I wanted to make that clear before somebody would come on this line and ask this question. I give my blessing for peace, for your good health. Say Amen with me. I give blessing for peace, for your good health, for harmony in your families, in your Jamaat, in your spiritual and material lives, for unity and for mushkil आसान। खाना बतान, खाना बतान, खाना बतान। मौला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें दो आशीष फरमाता हूँ सुकून के लिए, तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए, तुम्हारे दरमियान में समसला के लिए, तुम्हारी फैमिलियों में समसला के लिए, तुम्हारी जमातों में समसला के लिए, तुम्हारे रूहानी और जिस्मानी जिंदगी के लिए दो आशीष फरमाता हूँ। तुम्हारे अंदर यकताई हो और तुम्हारी मुश्किलें आसान हो। खाना उदान, खाना उदान, खाना उदान। For those who have been unable to attend today, so let me give you a little bit background. There were few Jamaat which were coming from far away, for example, New Mexico, Albuquerque, and Colorado, and some of them were not able to make it to the Didar Hall. So Imam remembered them first. For those who have been unable to attend today, you are especially with me in my heart and prayers. I pray for your spiritual enlightenment, for your worldly success, for balance in your lives, for your safety and security, for peace, and for मुश्किल आसान खाना वदान। और मेरी वो जमात जो किसी वजह से आज यहाँ पर नहीं पहुंच सकी है, और ऐसे सैकड़ों की जमात थी जो किसी वजह से वहां पर नहीं पहुंच सकी थी, मौला ने उनको याद फरमाते हुए उनको दुआ आशीष फरमाई और खाना वदान और मुश्किल आसान फरमाया। I also convey a special blessing for the eternal peace and rest of the souls of the Rouhani members of my Jamaat, खाना वदान, खाना वदान। और मैं अपने उन रूहानी बच्चों के लिए जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, उनके रूह के दायमी सुकून के लिए दुआ फरमाता हूँ। खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। I have accepted the bayya pledged by the Mukhi of the Dallas headquarters Jamaat Khana. Bayya reforms the permanent spiritual bond between the Imam of the time and his Jamaat. और जो बैयत आपके मुखी ने पेश की है, और बैयत क्या है? इमाम और मुरीद के दरमियान में एक वादा है जो मैं एज ए इमाम
of the time आपकी जमात से एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। दिस इज अ डीपली सिग्निफिकेंट बॉन्ड, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बंधन है इमाम और मुरीद के बीच में। The bond between the imam and his spiritual children is made in freedom and love. और ये बैयत और ये रिश्ता आजादी का है, जबरदस्ती का नहीं है, और मोहब्बत का है। बोला फरमाते हैं बेशक, आमीन, इंशाअल्लाह। I care for you, your imam cares for your safety and security. मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ, मैं आपके सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, अमन अमान के लिए फिक्रमंद हूँ। फॉर योर स्पिरिचुअल एंड मटीरियल एलिवेशन, और मैं आपके रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए फिक्रमंद हूँ। एंड फॉर योर हैप्पीनेस एंड वेलबींग, और तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी अच्छाई के लिए फिक्रमंद हूँ। I will always be connected to you through this bayya, और मैं हमेशा तुम्हारी इस बैयत से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ और तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूँ। आमीन। खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। My dear Jamaat, my first official visit to the Jamaat in the United States has been a very, very happy one. I have felt the warmth and the love of my Jamaat. I have been deeply moved by your emotion. This has been the longest visit I have made to any Jamaat so far, but it doesn't feel nearly long enough. मौला फरमाते हैं कि ये मेरी पहली मुलाकात है अमेरिका की जमात से, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और आपने जो बहुत ही वार्म और प्यार और मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया है, उसके लिए मैं बहुत ही मूव हुआ हूँ, और मेरे इमोशन आपकी तरफ आए हैं। और ये मेरी तमाम विजिट के दरमियान में सबसे बड़ी विजिट होगी, क्योंकि यहाँ पर इमाम 5 तारीख से लेकर 10 तारीख यानी कि तकरीबन 6 दिन रहे थे। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बड़ी विजिट नहीं है, क्योंकि इमाम हमको इतना चाहते हैं कि इमाम तो चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे दरमियान में ही। आखिरी पैराग्राफ के बाद हम रोकेंगे। आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड to returning to visit the rest of my Jamaat in USA, inshallah, in the very near future. I have been touched by the very warm reception I have received from the mayors of Houston and Dallas, and from the countries provided by their administrations, courtesies provided by their administration. This mayors, as well as those of a number of cities in which my Jamaat is based, have presented me the honor of the keys of their cities and proclamation of the welcome and respect. मुला फरमाते हैं कि मैं आगे की तरफ देखता हूँ कि कब अनकरीब मैं बाकी कि अमेरिका की जमातों की विजिट करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी ही। और मैं इस बात से बहुत ही मुतासिर हुआ कि जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पर खुशामदीद कहा, और जिन जिन शहरों के अंदर में गया उनके मेयर ने मुझे अपने सिटी की चाबियां पेश की और मुझे बहुत ही इज्जत दी, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो उन्होंने मुझे वेलकम और रिस्पेक्ट दी है, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा
महसूस करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। यहाँ पर हम रोकते हैं।